gentlemen, as I told you that I'll be coming live, so what I have to do is just a second. Okay, hi Twinkle. Hi. Can you please rotate your phone? Okay, sure. Thank you. ठीक है, तो we'll start with Twinkle and meanwhile दो और students will join us, ठीक है? तो पहले तो Twinkle you need to introduce yourself and congratulations JRF हो गया. Okay? Thank you. ठीक है, आप पहले introduce कर दो. हाँ. My name is Komal Singodia. I have pursued my MSc in Zoology and now I have cleared NET JRF with rank 30, AIR 30. Yeah, 30 is a nice rank. I didn't remember you are AIR 30. Nice. You're in top 50 students. Yes. And when did you complete your masters, or are you pursuing masters? No, I have completed my masters this year only. This year only. Okay, fine. Then also you're a fresher. Like you got opportunity, right? Yes, sir. Okay, 1 second. Let me invite 2 more people. Okay, so by the time they join, I have 10 to 12 questions for you. Okay, and based on the responses of students कि उनको क्या जानना है, तो let's start with their questions, and also if you want to add something आप भी add कर सकते हो. Okay. ठीक है? आप तो बहुत studious लग रहे हो यार, specs लगे हुए हैं. नहीं, ये तो बहुत पहले से लगे हुए हैं. बहुत पहले से studious हो फिर. हाँ, okay. So आप ये बताओ कि out of all the 3 parts, part A, part B, part C में आपका favorite part कौन सा था? Part C. Part C. Just because there were applied questions. There were applied questions. And I am more into concept rather than just ratifying everything. I cannot ratify. Okay, I understand. I thought you were saying just because wo part C carries 4 marks, na? So No. that's why you love part C. No, Okay, I love part because C of the because concepts, that is applied. right? Because of the concepts. If you know concepts, you can go for part C questions, but you cannot go for part B questions if you don't have the exact information. Exactly. Part B is more of factual kind, right? But also in CSIR, it's all about part C. I mean, if you are able to do some part C questions correctly, like 20 or let's say 21, 22, how many of your questions were correct from part C? I attempted 23 questions. Out of them, 18 questions were right in part C. Out of them, 18 were right. Okay, fine. Yes. So your risk was like calculated risk. Okay. Yes. So what about your preparation? Like, did you separate preparation for part A? I did separated my preparation as I have given it almost 1 hour daily for part A because general aptitude जहाँ मैथ्स आ जाती है थोड़ा बायो वालों के लिए हो ही जाता है मुश्किल वो चीज हो गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ा पार्ट ए के लिए डेली का 1 hour लगा रखा था for 3 months almost. For 3 months I was doing general aptitude. तो कितने क्वेश्चंस आप अप्रोच कर पाए फिर?
वो 1 hour आपको अ, कितना बेनिफिट किया लेटर ऑन? मैं उसमें हमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 7 करेक्ट थे मेरे। तो 9 करेक्ट थे वो? नहीं, 2 रॉन्ग हुए थे उसमें से मेरे। सॉरी वी लॉस्ट 1 सेकेंड, आपका नेट, हाँ। तो कितने करेक्ट थे, सॉरी? 9 आउट ऑफ सॉरी 7 आउट ऑफ 9 करेक्ट थे। 7 out of 9. And what about part B? Part B, I have attempted 23 question as well, like part C, and there my 21 questions were correct. I lost. She didn't pause the video. I didn't pause the video. Let's blame Wi-Fi. After that, I'm going to ask her कि कौन सा network है. I can't add you people. I mean, you're requesting me, I'm accepting, but then again, nothing is happening. Twinkle left. Haha. 1 second. Let me send a request. Meanwhile, you guys can see who's there. Hello, ma'am. Hello. It's, Hello. it's like, How are you? I'm fine. Thank you. What about you? I am good. Yeah, network problem. Yes, What I think happened connection is actually? going. Huh? What happened actually? I was about to add 3 people, na? So 1 second. Maybe it happens Yes, this he is time. online. I think Nirdosh is online. He's online, then Twinkle is also online, but I'm accepting their request, but nothing is happening. I think 2 people can join max. Oh, is it like that? I Then it's don't my know. fault. I haven't done. 1 second. Then I it's my think fault. you should first interview Komal. I am leaving. Oh no, that's all right. I'll ask her again. It's okay. I can do it separately as well. It's okay. Okay, fine. So you need to introduce yourself. It's like, oh, we got her back. Oh, here is. There was some issue with network. Okay. Yeah, actually. Uh, Let's blame Jio. कौन सा नेटवर्क है? Geo. Let's blame Jio. Yes. तो आपने अपने को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आप अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो एंड अबाउट योर रैंक एज वेल, फिर हम दोनों से Hello, साइमल्टेनियसली बात I करें. am. Hello, I am Proma. I have done PSc and MSc in botany, and I have secured CSIR Net JRF rank AIR 108. And last year I also qualified BRC. Ma'am doesn't know that. Okay. And I along didn't with I know. have also qualified. Yes, actually after qualifying BARC, I got to know you because many Yeah, people there told are you to so call. many people who are saying that after qualifying BRC they got to know me. I'm like, okay, fine. Yes. That's okay. At Yes, least and you've I also qualified, right? qualified ACTREC and TIFR Oh, nice. Last year only. this year. Okay, this year. So what about their Yes, yes. interviews? TIFR needs to submit one application form, so that SOP you are correcting, right? Okay, fine. SOP, right. Oh, that is for Yes, TIFR and only. yes. And for ACTREC, they will call for interview on June. ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है. चलो, आप दोनों को एक दूसरे से कुछ पूछना है? हाँ, BRC It's कैसे like क्रैक it's like किया? पता नहीं कैसे हो गया. Just prepared for CSIR Net and I gave the exam. पता नहीं था कि मतलब नाम आ जाएगा. Then afterwards, when the result came, I saw my name. this Congratulations. happens. वो एक्चुअली इट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी है कि नहीं ना. बीआरसी में टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होता है कि आपकी स्पीड कैसी है.
दो चीजें होती हैं, आप बहुत ज्यादा yes, yes, एक्यूरेट हो yes. या फिर बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो, तो वो डिपेंड करता है वहां पे। अगर आप बहुत फास्ट हो तो मेरे ख्याल से बीआरसी वो लोग थोड़ा ज्यादा कर पाते हैं, मतलब उनका बेंट होता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता कि कौन कर पाता है, पहले से क्या बता सकते हैं। बट देन ऑल्सो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो टाइम कंस्ट्रेंट एक हो जाता है, तो 2 घंटे में आप इजिली क्रैक कर लेते हो उतने क्वेश्चन। बट आई थिंक बीआरसी और का ज्यादा रिटन एग्जाम, क्वेश्चंस करने भी नहीं होते हैं। आई थिंक 60 क्वेश्चंस कर लो सही से तो हो जाएगा। हाँ 60 मतलब क्वेश्चन सिक्स कर लो। 55 टू, हाँ हाँ, इट वाज लाइक कि 55 टू 60, हाँ। 53 54 मैंने अपने टाइम पे सोचा था कि इतने ही करने हैं। बट व्हाट हैपेंड, मैं फास्ट करती हूँ क्वेश्चन, तो मेरे पास बहुत टाइम बच गया था, मैंने 61 62 कर मेरा भी दिए। सेम हुआ था। मेरा 10 मिनट मतलब 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया। हाँ एंड इट हैपेंस, पता है उसके उधर आप गलत करते हो क्वेश्चन, क्योंकि ग्रीड आ जाता है ना मन में कि इसके बारे में सुना है तो एटलीस्ट इसको पिकअप करेंगे, बट आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। ऑल्दो पेपर हाँ, निकलना इज लास्ट फाइन, मोमेंट मतलब क्वेश्चंस ऑलवेज रॉन्ग। Last हाँ minute question. लास्ट एग्जैक्टली मोमेंट पे जो भी, हाँ। हाँ That हाँ was लास्ट my मोमेंट नहीं mistake करना चाहिए। actually at that time when I was giving BRC. I did not practice too much question. I did not practice any of the question, and that was my mistake there. That was only my ओके mistake. ओके ओके। So आई and थिंक बीआरसी रिटन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना, इट्स मोर अबाउट गेटिंग मोर अबाउट interview. बीआरसी रादर देन सीएसआईआर इंटरव्यू। जेआरएफ। वो इंटरव्यू मेन है, तो उस पे हम लोग नेक्स्ट डे कर लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं, ओके। सो एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछ लिया है अबाउट यू, आई एम आस्किंग कि कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मेरा भी पार्ट सी। अच्छा आप उनको पार्ट सुन सी रहे क्योंकि थे। वहां पे, हाँ। ओके ओके हाँ हाँ Part C actually more conceptual and graphical questions are there. Then you can do elimination. हाँ So एग्जैक्टली। it's okay. एंड Accuracy वन, more मतलब ज्यादा हो जाता है। and I think one more thing is there that part C में 75 questions में से 25 करने होते हैं। It's like अगर मुझे Yes, ऐसे लगता है, that is the selection which is very important क्योंकि आपको वही करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, right? एग्जैक्टली बहुत नेगेटिव अवॉइड अच्छी करना चॉइस है। होती है। नेगेटिव आराम हाँ। से आप अवॉइड कर सकते हो, और वही रैंक मेकर और ब्रेकर वही है। ठीक है, व्हाट अबाउट पार्ट ए, सेपरेट प्रिपरेशन फॉर पार्ट ए। Part A, I did not do separate preparation. Actually, I could do 50 to 60 questions, 50 to 60% questions in Part A. So that was ओके my, that is my capacity actually. So I also did 9 questions, and out of that, 7 questions were right. So it gave me 13 marks. So it's enough, ओके I think. फाइन फाइन फाइन। सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज्ड। Revision, there is infinity. I think वो कभी खत्म नहीं होता, जितना बार कर लो उतना ही अच्छा है। मतलब वीकेंड पे तो करती ही थी। I've done MSc from Baligan Science College, University of Calcutta. Okay. And you? From Sirui, Madhav University, Sirui, Rajasthan. Okay. Okay. Yes. Sir. फाइन, सो यू आर फ्रेंड्स नाउ। Yes. ओके, टेल मी अबाउट मॉक टेस्ट। Okay, as I have joined a coaching, so there were mock tests every Sunday. And other than that, I have solved previous year questions of last 10 years. So that had helped me Okay. so much over it. And out of those 10 years, 2020 papers were too much hard to attempt. all other were easy, but 2020 papers were too hard to attempt. But they helped me with preparation.
Okay, and what about you? एक्चुअली आई जॉइंट अन अकेडमी प्लस, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट होता था, वही देता था, लेकिन आई थिंक द लेवल ऑफ CSR डज नॉट मैच विथ एनी ऑफ द मॉक टेस्ट. Only you can see how much you can do, how much you are going to, how much your negative is going, or how much you are doing correctly, where it is going wrong. Only that you can judge yourself. So वहाँ पे किया था. तो और कहीं ज्वाइन नहीं किया था. PYQs प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली किया ही थे. In this case, I got lucky because the material my coaching provided me were actually very good. They were at the level of CSIR. They also have a question bank which was also apt for CSIR. I actually liked that when I was preparing. क्योंकि आप Okay, so कोचिंग में what was चाहे your कितना भी coaching's पढ़ लो. name? It's IFAS, Indian Okay, fine. Okay, हाँ. okay. Institute for Advanced Studies. Advanced IFAS Jodhpur, right? IFAS Okay, Jodhpur. okay. Yes, I am here only right now. Okay, okay, okay. Yes. फाइन. एक्चुअली CSIR का एक मेन चीज व्हाट आई हैव जज्ड, मैंने तो 2018 में दिया था ऑफ कोर्स, बट आई थिंक अब ये डायनेमिक ज्यादा हो गया. पहले ये स्टैटिक था, बट अब इट्स बिकमिंग डायनेमिक एज वेल एज डीप. वो दोनों हो जा रहा है क्योंकि सी इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है ना, तो सेचुरेशन आ गया है. आई थिंक CSIR इज ट्राइंग की व्हाट टू लाइक एड न्यू. आई मीन इतना चैलेंजिंग वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे बना देगा, बिकॉज देयर इज एन अकेडमी, राइट? देयर आर सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एवरीबडी इज गिविंग काइंड ऑफ मॉक क्वेश्चंस, काइंड ऑफ predictions from More their side. resources, yes. Yeah, and also PhD students are coming, and like they are currently doing research and they can frame research oriented questions. So that therefore I think CSIR is making that level, it's elevating its level as well. सो वो हाँ एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कोई लगता हो कि नहीं होगा, लेकिन IFAS का मैंने देखा तो नहीं है, बट हाँ रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग तो हाँ पता चलता है कि हाँ उस लेवल को मैच कर पा रहे हैं हम. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड यू प्रिपेयर पार्ट सी? पार्ट सी तो प्रिपेयर हो जाता है वैसे, जो आप पढ़ते हो उसी से, Yes. बट इज इट लाइक कि जब आप व्हेन यू आर नॉट इन टच विद योर लैब, आप दोनों में से किसी ने प्रोजेक्ट किया है? No. 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 तो लैब का कोई नॉलेज नहीं है, देन कोई इज इट knowledge लाइक कि वो जो टेक्निक के क्वेश्चंस होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं, राइट? तो They were आप क्या करते थे? आप उन तो यू यूज्ड टू स्किप दोज, राइट? या फिर करते थे? I have skipped those क्योंकि मेरा टेक्निक्स में हाथ बहुत ज्यादा तंग रहा था, तो I have skipped those. But now I am studying techniques and I think I am better at it than before. ओके क्योंकि फाइन, सो यू कुड हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन. नहीं आता. ठीक Yes. है, तो आर यू स्टडीइंग फ्रॉम सम ऑथेंटिक बुक? Not now. I was not studying from authentic book till now, but now I am trying to read some of the books so that Yeah, I you can better get do because you will have to face interviews, right? yes. So That's why you I'm better getting should. more into it. इट्स नॉट लाइक कि आप लैब नहीं गए हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इट्स लाइक कि आपको जो पता है यू शुड बी लाइक वो करेक्ट होना चाहिए. योर ओरिएंटेशन, योर वर्ड्स, योर थिंकिंग शुड मैच देयर. ये नहीं कि आप टेक्निक्स में फिर कुछ भी बोल रहे हो. Yes, that's it. एंड व्हाट अबाउट यू? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर पार्ट सी? टेक्निक्स. Yeah, like techniques. The question was through techniques. Okay, टेक्निक्स fine. तो कुछ मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि पार्ट का इंटरव्यू था, तो तब तो बहुत कुछ पढ़ी थी, मतलब सो कुछ पता है. तो टेक्निक्स नहीं भी पढ़ो तो CSR हो जाता है, लेकिन यस कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने 2020 नवंबर में जब एग्जाम दिया था, PCR का प्राइमर से क्वेश्चन आया था, तो आई कुड डू इट. मतलब जो पता है उससे तो कर लेते हूँ. ओके फाइन, ठीक है. तो आप दोनों से बात करके आई एम गेटिंग टू नो कि यू बोथ वर ऑन डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि आप BRC पहले एग्जाम कर चुके थे, क्योंकि रिटन क्वालिफाई हो गया था, तो आपका कुछ yes. ज्यादा ही प्रिपरेशन, जो जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है ना, बी इट इन एनी डोमेन, वो आपको हमेशा आपके रिटर्न में हेल्प करता है. हमेशा जो और इंटरव्यू में पार्ट का आप PhD इंटरव्यू भी था, तो वहां पे भी आई क्वालिफाइड, बट आई डिड नॉट जॉइन BRC PhD. वाई? सो वहां पे एक्चुअली एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव एनी LS और JRF, तो मैं सोच रही थी कि अगर ज्वाइन कर जाऊँ तो उसके बाद अगर नेट क्वालिफाई ना हो पाया तो बहुत बुरा होगा. सो आई टुक अ लिटिल रिस्क. तो यही था रीजन, और कुछ नहीं.
Okay, fine, तो fine. इसीलिए टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है. मतलब मेरे कॉलेज में भी आई डिड प्रैक्टिकल, आई डिड डिसर्टेशन, सो इट हेल्प मी. Hmm. Okay, fine, fine, fine. ठीक है. So next question is, how many units did you target? Was it like all the 13 units, or like 9 to 10 units, or thoda thoda sabse? Mostly I targeted 8 units. I targeted 8 units out Okay. of those. Like I prepared them very well, and I did read. Like I read 10 units, but 8 units were actually prepared. The 2 units were like Okay, fine. a So it, backup plan. They were I for got that. backup plan Okay, only. okay. What about you? I targeted 11 units, but not 100%. Like 90 to 95% I did. I did not complete the whole, and after that I only read the important topics. और unit 7 और 9 पूरा skip कर दिया था. 7 or 9 है कौन सा? Is it diversity? Animal Animal physio. physiology. Animal physio. Yes, Okay, you yes. are from botany. Diversity. Okay, that is my favorite. You are from botany, that's why. It happens कि आपका advantage कहाँ पे है? क्योंकि she is from zoology, तो वो उनको benefit करता होगा. And also I think it's wrong to say कि आपने कुछ out of 13 units कुछ कम units prepare की होती हैं, क्योंकि आप पढ़ते सारी units हो, right? Out of which आप कुछ units Yes, आपकी yes. favorite हो जाती हैं, with time कुछ units पढ़ते पढ़ते strong हो जाती है, और उसमें से कुछ units बचती हैं जिनके आप पढ़ने के बाद भी PYQ करते हो, but वो strike नहीं होते. तो यू आर लाइक Yes, कि yes. फिर आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, तो मैंने इतनी यूनिट्स पढ़ी थी, बट आई थिंक 13 यूनिट्स हर एक स्टूडेंट जिसने जेआरएफ को Yes, I think connection got lost. दिख जाए. Actually, I'm an early bird person, so I used to wake up at 4 a.m. So 4 a.m. से 8 a.m. तक मैं स्टडी कर लेती थी. उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेती थी. Then again I used to study for 10 to 12, and उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड बाथ लेके थोड़ा सो जाती थी. And afternoon में I used to practice PYQs क्वेश्चन. and yes, PYQs, and from evening time I either used to watch YouTube or I used to do revision, recalling, etc. मतलब कुछ नए नए पढ़ती थी. पढ़ना जो होता था वो मॉर्निंग में ही कर लेती थी. और एग्जाम में एक्चुअली आई डिवाइडेड द टाइम लाइक पार्ट से मिनिमम 1 hour आई विल गिव. फर्स्ट आई यूज टू ओके, सिलेक्ट द क्वेश्चंस. यस, ओके, मतलब जो क्वेश्चन कर पाती थी तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके चली जाती थी. सो ऐसे करके 25 क्वेश्चंस maximum selection, but I could not do this. I could not do 25 this time actually in part C. So I only did 22 questions, and out of which 19 were correct. तो 22 क्वेश्चन पहले मार्क किए थे. उसके बाद आई सॉल्व दैट 1 hour. आई थिंक इट टुक 1 hour to 1 hour 15 minutes, and then I gave 30 to 40 minutes for part B and rest time part A. And ओके. last 5 minutes I checked the answers just सो वाज whether इट I लाइक marked it प्री correctly. प्लान? वाज इट लाइक प्री प्लान कि मैं टाइम मैनेजमेंट ऐसे करूंगी एग्जाम में, और इट वाज लाइक Yes, कि हाँ yes, वो. ओके, फाइन. सो इट वाज yes, प्री it was प्लान. pre-planned. Yes, yes. ओके, फाइन. सो somebody is Like saying if you you are not give audible. two by or 1 second. Just a minute. Huh? Let me ask them. Am I audible? You can write here. Twinkle is again. 1 second. Twinkle, I can't accept it. 1 second. I'm sending the request. Okay. So I sent it. Yeah. You were saying something. yes, it was pre-planned. Like if you give 2 hours in part C only, then when will you do part A and part B? So you have to manage time, right? So Exactly. maximum part C questions. First, you have to select the best 25 questions you could do. Then you have to do the questions. Maximum 5 to 10 minutes you can take. 5 Okay. 6 minutes maximum. Okay.
Okay, one more question I have. Have you guys given exam when it used to happen in offline mode? No. No. Okay, fine. So both of you are habitual with the online mode, right? So Yes, कुछ yes. लगता है कि is there some problem? Like आपको sync करने में problem होता है? Yes, actually, Oh, due to Hindi interface, this time lots of server issues were also there. The centers were not good enough, so lots of complaints were there. और हिंदी के वजह से you have to scroll a lot of मतलब बहुत टाइम जा रहा था. दो बार ऑप्शंस आ रहा है, दो बार ग्राफ आ रहा है, तो ये बहुत इशू हुआ था इस बार. Many students complained this actually. I think there are students जिनका हिंदी मीडियम होता है and they choose it for their exam also. तो वो उनने insert कर दिया. It should be like कि on one side there should be questions in Hindi only and on one side they should be for English. और also आप online करा रहे हो तो I think आप English वाले को English paper दे सकते हो. तो otherwise online हाँ. में sorting can happen easily online में आप offline तो नहीं करा रहे. Okay, so next question is how to handle pressure. प्रेशर, बस वो थोड़ा प्रेशर रहना भी चाहिए आई गेस. थोड़ा सा प्रेशर होना Constructive, चाहिए. वो कंस्ट्रक्टिव होता है, constructive स्ट्रेस नहीं pressure. होना चाहिए, बट थोड़ा प्रेशर होना चाहिए. लाइक आपको ये लगना चाहिए नहीं एग्जाम है, आई हैव टू फाइट इट, then only you can go through it. That was my mantra for the last 3 months. I got this only, that I have to give this exam and I am going to clear this exam only. I am never going to try again. Yeah, this works actually. अगर आप किसी चीज को अपना लास्ट अटेम्प्ट बना लेते हो ना, फर्स्ट अटेम्प्ट चाहे काम करे ना करे, बट लास्ट अटेम्प्ट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम. Most of the So time. yeah, वैसे I mean, और आई थिंक व्हाट अबाउट द प्रेशर? आप दोनों में से कोई ऐसा है जिसको फैमिली से प्रेशर आया? No. नो, फैमिली से प्रेशर होता. इट फैमिली वाज से नहीं, कम्प्लीटली लेकिन एक साल कोऑपरेट. से एग्जाम नहीं हो रहा था ना, तो उसका प्रेशर था कि क्यों नहीं हो रहा है एग्जाम, कब होगा. मतलब ये तो एक अनसर्टिनिटी थी कि कब होगा एग्जाम. हाँ, बस वही एग्जैक्टली. प्रेशर था. बाकी और फैमिली की साइड से कोई प्रेशर नहीं था. उनकी साइड से था ओके यू प्रिपेयर, यू डू व्हाट यू वांट टू डू. इट वाज लाइक दैट. नाइस, नाइस. व्हाट अबाउट कि आपको फ्यूचर में कहाँ से पीएचडी करना है? Haven't thought about that. I am actually confused. I messaged you regarding this. कंफ्यूज्ड आउट ऑफ, इनका तो चलो आई गेट टू नो कि एक ट्रैक और टीएफआर हाँ, अभी है माइंड में. एंड अबाउट यू, डू यू वांट टू गो फॉर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट? that's why I was confused. Some of my friends told me that institutes are way too stressful for anybody. Like if you actually want to go into research, then go to any institutes. Otherwise, you should go for university only. That's more easier to go. So I was confused whether I should go for institute or any university. दैट So I'm अगेन still डिपेंड्स कि आपको फ्यूचर में क्या करना है. लाइक इफ यू आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड साइंटिफिक पोजीशंस एंड आपको ग्रुप लीड करना है, देन गो फॉर इंस्टीट्यूट. अदरवाइज गो फॉर यूनिवर्सिटी. okay. इट्स नॉट लाइक कि यूनिवर्सिटीज में अच्छा काम नहीं हो रहा है, देन अगेन है वहां भी, बट इंस्टीट्यूट्स में यस दे आर स्ट्रेसफुल. एकेडमिक पोजीशंस बहुत के लिए यूनिवर्सिटी इज ओके आई थिंक, एंड रिसर्च के लिए आई थिंक एग्जैक्टली, इंस्टीट्यूट्स. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. और आप यूनिवर्सिटीज से फिर आपका जो माइंड है ना, आप आई कैन से कि इंस्टीट्यूट से यू कैन गो बैक टू एकेडमिक्स एज वेल, बट इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां से आप रिसर्च में नहीं जा सकते उसके बाद, सच में नहीं बिकॉज जा आपका एक सकते. माइंडसेट चेंज हो जाता है वहां पे जाके. Yes. इसीलिए बस ठीक है, कोई फाइन. था थोड़ा सा. ठीक है, आराम से, यू हैव ऑप्शंस. अभी तो आई थिंक एप्लीकेशन से इनवाइट कर रहे हैं. व्हाट यू डू इज कि आप एटलीस्ट ट्राई टू गिव इंटरव्यूज, शॉर्टलिस्ट हो जाओ. मेरा तो बस एक ही मानना है कि हैव एज मेनी ऑप्शंस एज यू कैन, है ना. उसके बाद इट शुड बी योर चॉइस, आप चूज करो, राइट. अभी आपको सोचना पड़ रहा है कि इनमें से किस में जाऊं, एंड देन इट शुड ऑल्सो बी लाइक कि इतने सारे ऑफर्स हैं, इनमें से कहाँ जाऊं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन Ma'am, there इज is हाउ one इम्पोर्टेंट. question. Ma'am, what is your opinion regarding this university or institute, and which institutes are better? Like, can you suggest some? या आई कैन एक्चुअली. देखो, मेरा इज कम्प्लीटली लाइक कि पहले आप इवेल्युएट करो कि आपको रिसर्च में जाना है या फिर एकेडमिक्स में रहना है. इट इज लाइक सी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आप पीएचडी कहाँ से कर रहे हो. द प्रॉब्लम इज आप एक यंग एज में पीएचडी करने जाते हो, राइट. तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं.
एंड देयर इज अ थिंकिंग, वो दिमाग में एक ऐसी थिंकिंग है कि आपने अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया देन यू आर गोइंग टू डू सम बिग डिस्कवरी, है ना। और पीएचडी में जाके आपको कभी कभी वहां जाके पता चलता है कि यू आर वर्किंग लाइक अ लेबर, मतलब आपको बहुत ज्यादा काम करना है क्योंकि आप यू आर लर्निंग समथिंग, राइट, लर्निंग फेज में हो। और लर्निंग फेज में हम बचपन में थे तो हम भूल जाते हैं कि हम बचपन में कैसे लर्न करते थे, है ना, कितना मुश्किल होता था। देन अगेन पीएचडी वहां पे जाके डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये करना है कि आपको रिसर्च में ही रहना है हमेशा, तो गो टू इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट जाओ जिसमें से अभी के लिए आप देखो, आईआईटीज भी स्ट्रेसफुल है, आईसर्स भी स्ट्रेसफुल है, ठीक है, आईआईएससी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो लेकिन आउट ऑफ द थ्री, द थिंग इज कि आप कौन सी लैब चूज कर रहे हो उसके बाद बी वेरी श्योर, आप कम से कम एटलीस्ट हैव 5 to 10 सोर्सेज, आप 10 सोर्सेज से पता लगाओ कि आपका वहां पे जो गाइड है और जो एनवायरमेंट है, वर्किंग एनवायरमेंट, वो कैसा है। बिकॉज आप सोर्स अगर कहाँ से किसी, मिलेगा, उतना तो कॉन्टेक्ट नहीं है ना, दैट देखो इज द सोर्सेस क्या होते हैं, किसी भी गाइड की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद उसके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, राइट, कहीं कहीं पे ग्रुप मेंबर्स का कॉन्टैक्ट मेंशन्ड होता है और कहीं कहीं पे मेल आईडी, जस्ट मेल देम, ठीक है। ओके। पीपल आर काइंड इनफ, मतलब 10 में से 5 तो करेंगे आपको रिप्लाई, 5 नहीं करेंगे तो 2 भी करेंगे, तो एटलीस्ट एक इंसान भी आपको सच बता दे, दैट इज इनफ। बट हाँ, यू हैव टू डू वन थिंग कि आपको ट्रस्ट करना है उस इंसान पे। मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बच्चा बता रहा है कि नहीं गाइड नहीं अच्छा है, तो आप सोचोगे कि ये चाहता है मैं उस लैब में ना जाऊं, राइट, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज सेइंग, बट उस इंसान का कोई ग्रज थोड़े ना है आपसे। द थिंग इज, आपको अगर किसी गाइड के बारे में नेगेटिव चीजें पता कर चलती हैं तो आप उसको रिकन्फर्म करोगे, ठीक है, वो सोर्सेस आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। अब अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको लोग मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए। बाकी मेरे अगर कॉन्टैक्ट्स में जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में होंगे वहां के मैं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये करना है कि आपको मानना है, यू हैव टू मतलब बिलीव इन द अदर पर्सन कि हाँ अच्छा ये बोल रहे हैं तो इसकी कोई मीनिंग है, ठीक है, क्योंकि आप अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हो पीएचडी करने तो आपके 5 to 6 years वहीं रहेंगे, ठीक है। इट्स लाइक वो जो मेंटल एक वो होता है ना कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज फॉर अदर ब्रांचेस। हम वेट लैब वाले लोग हैं, बायो में आपको एक चीज प्रूव करनी होती है, एक लाइफ के अंदर डाल के मैनिपुलेट कर रहे हो, इतनी जल्दी आप रिजल्ट ही नहीं ला सकते, और कहीं गलती से जेनेटिक्स वगैरह में घुस गए तो आपको 7-8 साल खींच देंगे। तो 7-8 साल आप 7 महीने के लिए एक रूम इतने अच्छे से डिसाइड करते हो, तो 7-8 साल के लिए एक लैब बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी है। मतलब आप, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, हैव एज मेनी सिलेक्शंस एज यू कैन, आप सिलेक्ट हो जाओ मल्टीपल जगह, आप गाइड से पूछो, आस्क द क्वेश्चन, वो आपको रिक्रूट कर रहे हैं, दैट अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे यू, वो आपको रिक्रूट कर रहे हैं, राइट, दे हैव पोजीशन एंड यू आर गेटिंग रिक्रूटेड, और आपका एक राइट है, आप उससे पूछोगे कि मेरा कितने टाइम में पीएचडी कंप्लीट होगा, मैं अलाउड हूँ कि नहीं हूँ घर जाने के लिए, ठीक है। तो यू शुड हैव दोस क्वेश्चंस एंड बी एज स्मार्ट एज यू कैन, इट शुड नॉट बी लाइक बच्चे की तरह हम हाँ सर मिल गया ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, यू नॉट बेगिंग एनीथिंग, आपने कितना मेहनत किया, राइट, आप इतना रुके हो उसके लिए। तो मेरे ख्याल से आप इंस्टीट्यूट्स के इंटरव्यूज दो, अप्लाई करो, जितनी जगह आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद डिसाइड करो कि किसके पास आपको जाना है, ठीक है। थैंक और यू। एकेडमिक्स के लिए यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं और रिसर्च के लिए डेफिनेटली इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं। और अगर उससे ज्यादा थोड़ा और रिस्क टेकिंग हो कि हाँ रिसर्च में ही रहना है, तो कोई प्रोजेक्ट करो, अच्छी रिकमेंडेशन लो और बाहर चले जाओ, वो भी आप कर सकते हो। दैट अगेन डिपेंड्स कि आप में कितने गट्स हैं, आपको बाहर भी तो सर्वाइव ही करना है। एंड पीएचडी आप इंडिया में करो, आप बाहर करो, आप नेपाल में करो, आप कहीं जाके करो, पीएचडी सेम रहेगी, ठीक है। प्रोसेस पूरा उतना ही ग्रिलिंग है आप जहां भी जाके करते हो। बट हाँ, द थिंग इज कि अगर आपको रिसर्च में रहना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे ये 5 to 6 या 6 to 8 years इस जगह पे सर्वाइव करना है, तो उसके लिए आपकी वो जगह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अच्छी ही अच्छी है कि हाँ घर के लिए अलाउ कर दे रहे हैं, हर चीज की अलाउंस मिल रही है लेकिन लैब में काम नहीं हो रहा, मतलब एक पेपर्स भी मॉडरेट स्ट्रेस इम्पोर्टेंट भी है। उतना। पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की वेबसाइट पे आप जाते हो, आपको दिखता है कि ये तो इसका अपना पेपर है, जब ये बच्चा था या जब ये अपनी पोस्ट डॉक करे थे, लीव दैट पर्सन, सामने से छोड़ना, चाहे आपको बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ऑफर आ रहा हो, ठीक है। बातों पे नहीं जाना, जो रिटर्न में प्रूफ है वहां पे देखना है कि साइटेशंस कितने हैं और पेपर कैसे पब्लिश हो रहे हैं। पब्लिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या प्रूव करोगे, आपकी क्या टेस्टिमनी है कि आपने पीएचडी किया है, आपका पब्लिकेशन, राइट, कि आपने कुछ काम किया है, ठीक है। तो पता चल गया इंस्टीट्यूट या वो, और ज्यादा ही खुल के बता दिया मैंने।
बट हाँ ठीक है, आप अभी एग्जाम्स वगैरह निकालो फिर बताना मुझे। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है मतलब कि हाउ हाउ डू यू इम्पोर्टेंट। हैंडल दिस स्ट्रेस इन द पीएचडी? मतलब कभी कभी मूड तो ऑफ हो जाता है अगर गाइड ने डांट दिया तो। यार मूड वूड सब कुछ मतलब ऑफ होना इज फाइन ना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको इंट्रिंसिकली थोड़ा मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। यू शुड नो कि आप क्यों कर रहे हो ये चीज। एंड मेरी स्टोरी तो बहुत अलग ही है, मेरे को पीएचडी करना ही नहीं था, मेरे को बाहर नहीं जाना था, वो नहीं हुआ। तो इट्स लाइक ये वो एक चीज है अभी कि आपके पास एक चीज तो है करने को। और ऑल्सो मेरे ख्याल से साथ में ऑप्शंस रखो कि आप कुछ और चीज परस्यू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आप लोग से बात करती हूँ ना, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि एक तरफ से अगर आप परेशान हो रहे हो तो मैं दूसरी तरफ से दे रही हूँ या आई एम हेल्पिंग अदर पीपल, तो वो मेरा नलीफाई हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई हॉबी परस्यू करनी है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे यू आर डूइंग समथिंग है ना, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, तो आपका नेगेटिव इट्स लाइक क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कोई आपको अगर क्रिटिसाइज करता है डांटता है तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट गुड इनफ। लाइक तो आपको लगेगा शी इज गुड इनफ, और मुझे भी लगेगा कि यार मैं तो किसी के लिए कर पा रही हूँ। तो इट इज लाइक कि मेरे को लगता है एक टाइम पे आके जब आप पीएचडी एनरोल होते हो, यार 23, 24, 25, जिस भी एज में कभी भी कुछ सोचा होता है कि यार चलो मतलब कुछ भी स्टार्ट करना है या लोगों की हेल्प ही करनी है, वो करना स्टार्ट कर दो साथ में। तो क्या होगा, आप एक जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव या कुछ स्किल्स ऐड करते रहोगे डेली अपने में। एंड पीएचडी इज नॉट इंटायर लाइफ ना। आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें क्या लेके निकलोगे, ये तो आपका पर्सनल है, राइट। उसके लिए कोई दूसरा आपको नहीं कह सकता, बिकॉज दिस इज करियर। यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा उसको अपनी स्टडीज मानने लगता है, दिस इज करियर, राइट। तो उस जगह पे मुझे लगता है आपको अपनी हॉबी परस्यू करना जरूरी है, आपको कुछ एक आउटलेट रखना है, चाहे एक्सरसाइज योगा जो भी है, वो सारी चीजें रहेंगी तो यू विल बी बैलेंस्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके। थोड़ा थोड़ा ठीक है। मेरा क्वेश्चन बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ एवेल्यूशन इज इम्पोर्टेंट। मतलब मॉक टेस्ट में हम थोड़ा चीट करके अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट विल गेट अस एनीवेयर। अगर आप मॉक टेस्ट में बिल्कुल चीट नहीं करते हो, you can only evaluate yourself there and you can grow there only. Otherwise one cannot grow if there is no self evaluation. क्योंकि एंड व्हाट मॉक अबाउट टेस्ट द में हमें सेल्फ मार्क्स इवैल हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, कि मॉक टेस्ट में हमें मार्क्स जस्ट वो हम तक रहते हैं, बट एक्चुअल में सीएसआईआर में क्या हो रहा है, अगर हम हमारी गलतियां पकड़ेंगे ही नहीं तो हाउ विल वी अटेम्प्ट द एग्जाम एक्चुअली। ओके फाइन, ठीक है। तो ये आया सेल्फ इवैल्यूएशन वाइल प्रैक्टिसिंग, बट वो सेल्फ इवैल्यूएशन का क्या जो आप फेलियर के बाद आता है। इट्स लाइक कि आप नहीं कर पाते हो तो आप ज्यादा परेशान होते हो, ठीक है। तो वहां पे जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि अपने आप को कोसना सही है गलत है। नो, आई डोंट थिंक अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा। आई हैड फेल्ड व्हेन आई हैड फेल्ड माय नीट एग्जाम, दैट वाज एक्चुअली वन प्लेस वेयर आई थॉट, see, when I started preparing for CSIR, I thought one thing only, that the mistakes I have did in my NEET preparation, I won't repeat them here. That was the main thing फेयर which इनफ। I kept in my mind all the time, that I should not do those things which I did at that time. Yes. अपने आप को ओके, कोसने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा तो आपको अपने आप को फ्री हैंड देना पड़ेगा, कोसने से कुछ नहीं एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन एट कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ये प्रोसेस, दे नो एवरीथिंग। आपको बहुत मेरे से 1000 टाइम इंटेलिजेंट पीपल यू कैन गेट टू, इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे, बट उनका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्रिटिकल सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन सिर्फ वहां करना है जरूरत है। सो व्हाट अबाउट यू, योर टेक ऑन सेल्फ इवैल्यूएशन एज शी सेड, क्योंकि उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस था नीट का। व्हाट अबाउट यू? यस, मेरे पास भी था। एक्चुअली दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन सीएसआईआर नेट। तो पहले वाला जो अटेम्प्ट दिया था उसमें 95 परसेंटाइल आया था, तो आई न्यू दैट मुझे 95 से 99 परसेंटाइल में लाना है। सो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, विच क्वेश्चंस आई एम डूइंग रॉन्ग एंड व्हाई, उसमें क्या कॉन्सेप्ट में लैगिंग है, तो उसको फिर से करना पड़ता है। डीमोटिवेट नहीं होने का मतलब, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू द डू वेर फाइंड आउट मिस्टेक्स। मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने एग्जाम देने के बाद पेपर भी नहीं चेक करता, so I think that is very wrong because you should know where you are doing mistakes and why you are doing mistakes.
and also that will help you in the future preparations. Like अगर कहीं पे fail हुए हो तो next time वो mistake नहीं करना है. So that is very important. Exactly. And I think one more thing I want to add कि आप ये जो एग्जाम दे रहे हो इसके बाद you have to extend your studies, right? ऐसा तो नहीं है कि Yes, आपको अब yes. 9 to 5 जॉब करना है, तो पढ़ाई तो आपसे छूटने वाली है नहीं, चाहे आप एग्जाम को खुश होके दो चाहे दुखी होके दो, पढ़ाई आपसे नहीं छूटेगी, राइट? इसमें तो इट्स लाइक द फील्ड यू आर चूजिंग, जिसमें आपको अगर आप मरने भी जा रहे हो तो यू शुड बी लाइक कि लास्ट अपडेट क्या हुई है मेरी वाली रिसर्च में, तो वो आपको इतना ज्यादा अपडेट रहना है उस चीज में, राइट? तो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू गाइज, उसके बाद मैं उसको ऐड करने की कोशिश करती हूँ बिकॉज ही सेंडिंग रिक्वेस्ट, उसने कम से कम 1000 टाइम्स भेज दी. ठीक है, सो हाउ डिड यू स्टडी यूनिट 13? That question is repeated. I think you guys have already answered. So you can tell me, can you count the number of times you revised the notes you had? I revised them 2 to 3 times. In 15 days, last 15 days, I revised them 2 to 3 times. I gave 2 days for each subject, for each unit in the last 15 days. And weekly revisions were there also. I did that. Weekly revisions were there for all the time. And for last 15 days, I gave 2 days for every unit. That's how I did my revision. Okay. And what about you? Actually, I did revisions 1 unit per day for the last 15 days. And before that, weekend revisions were they always there. अगर कोई exams आ रहे तो उससे पहले भी अगर time मिल रहा है तो वो भी revise कर ले रही हूँ. तो revision is continuous. You have to do that, otherwise you will forget. Okay. So one more question from my side कि अगर आप if you're preparing let's say for CSIR and in between like इस बार तो नहीं हुआ, if some other exam comes like DBT हो गया, अगर वो CSIR के पहले पढ़ रहा है या फिर बीच में ही पढ़ रहा है, तो how to manage that? इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर हाँ जैसा मेरा एमएससी के एग्जाम के साथ हुआ था, लाइक हाँ फाइनल एमएससी के फाइनल एग्जाम्स एंड बीआरसी एग्जाम वाज देयर आल्सो. So I had to prioritize, of course. I had to prioritize there कि अगर MSc ही ठीक से complete नहीं तो I could not go for anywhere. So I prioritized MSc there and I left BARC there. But this time mentally I was free. But yes, there was one thing that I had my GATE exam on 12th Feb and CSIR NET exam on 17th Feb. So that traveling was tiring and that actually had lacked somewhere. I think I could have done more better if I did not wasted my 2-3 days in traveling there. It was like that. I had to waste it took two days to go and to come and 1 day for exam. So 3 days were like I did not revise too much. Okay. So I think one thing that we can say is कि ये distracting सबके लिए ही होता है. It's as natural, right? तो जितना दिखता है, तो you need to manage that. तो अगर बीच में कोई एग्जाम पढ़ रहा है तो that is distracting. See, लाइफ में सबसे बड़ी पीस ये होती है कि सब परेशान है, कि मतलब सबके साथ वही चीज हो रही है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग जिसको जिनका नहीं हो रहा है एग्जाम, उनके लिए विल बी अ मैसेज कि हाँ ठीक है, ये सारी चीजें सभी के साथ होती है, बट द पीपल हु नलिफाई कि ये मैटर नहीं करता है एंड जो प्रायोरिटाइज करते हैं, आई थिंक दे आर एबल टू सिक्योर, एंड जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा. जेआरएफ कौन सा बड़ी बात है, राइट? तो ठीक है. अब आप लोग को अगर कुछ ऐड करना है तो यू गाइस कैन ऐड समथिंग एंड फिर आई टेक योर लीव एंड देन आई ऐड हिम एंड आई टेक अ सेपरेट इंटरव्यू. Yes. Do you want to add something? No, there's nothing like I want to add. Okay, so thank you so much, and I think आज के insights के बाद I am planning to have a session for BARC, right? With you both only. So it'll be like discussion. It'll be more towards the discussion direction, and also I will ask some of the people if like they were able to qualify the interview, if they will be willing to join the session. तो उनके साथ भी कर लेंगे, ठीक है? So thank you so much इतना सारा time देने के लिए, and congratulations. Thank you I so think it's your much. time. Thank It's you. your time. Just enjoy and you guys can ask me anything. And अगर आपको research के ही regarding पूछना होगा
ठीक है, और या फिर कोई एग्जाम के लिए पूछना होगा, क्योंकि यू बोथ आर फ्रॉम कोर बैकग्राउंड्स, तो आपके लिए तो एडिशनली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं वो भी होते हैं, राइट। आरपीएससी का उनके लिए हो जाएगा। एंड अबाउट यू, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आपको College एकेडमिक में Service जाना है, Commission and Public Service Commission, both exams are there in या West. या सो यू गाइस कैन गो फॉर दैट ओनली। वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कोर फील्ड में रहने का, कि आप डायरेक्ट मास्टर्स के बाद इफ यू हैव नेट तो आप अप्लाई करो, योर एलिजिबिलिटी इज नेट ओनली। उसके बाद आप अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो देन क्वालिफाई द इंटरव्यू, एंड उसके बाद ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच यार, दोनों थक गए मुझे लगा। No, no. बेस्ट पार्ट इज No, आप ma'am. दोनों ही स्पेक्स कर रहे होंगे। आई ऑलवेज हैड दैट कि मेरे को स्पेक्स लगाने जस्ट टू लुक स्टूडियस, राइट। तो मेरे को कभी लगे नहीं स्पेक्स, बट वो देख के मुझे बड़ी Ma'am, you are अच्छी फीलिंग आती lucky. है। You are Oh, lucky that. actually. Now I understand that. Now actually I understand that. ठीक है, चलो। Everyone wants to Thank get you. rid of them. You want to? It happens यार, actually natural तो natural ही है ना। Yes, ma'am. ठीक है। So I Thank want you, to ma'am. tell you guys. So how was your development biology? One last thing. My developmental biology was good. Actually, it was one of my favorite subjects, like first animal physio and then developmental biology. So it was And good. what about you? Developmental biology is good, but you have to memorize so many gene names, and so that needs very much revision. So, but it is good. Exactly. If you gain the concept, you can do the questions. Okay, so can you guys tell me कि जो हाथ में वेब्स होते हैं या पैर में जो वेब्स होते हैं, अगर उनको रिमूव करना है, पहले जो हाथ आपके होते हैं दे आर जॉइंट, राइट। तो अगर इनको रिमूव करना है तो आपके कौन से फैक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं? Apoptotic factors. एपोप्टोटिक फैक्टर्स, साथ में कोई प्रोटीन, BMP. बीएमपी, एग्जैक्टली। एंड लेट मी टेल यू वन सरप्राइजिंग थिंग कि मेरे जो पैर की 2 उंगलियां है ना वो जॉइंट है, तो मेरे जो बीएमपीज है ना वहां पे काम नहीं किए। तो ये दोनों दोनों उंगलियां पैर की दोनों जॉइंट है। इट सेज कि सिमेट्रिक होता है आपका ये प्रोसेस, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ के वेब्स हटते होंगे, फिर यहाँ के हटते होंगे, फिर यहाँ के, तो मेरी ये दोनों जॉइंट है पैर की। Ma'am, you should give a picture and write that. Right. Yes, of अरे course. तो that पहले पैर को उधर कर लेते That will be a good example to Yes. memorize actually. Live example. मैं तो Yes. आई रोट बीएमपी ओवर दैट, वो जो पूरा कनेक्टेड वेब है ना, मैंने उसके ऊपर बीएमपी लिखा हुआ था एक टाइम पे, क्योंकि भाई ये मिसिंग था मेरी बॉडी। चलो ठीक है, ऑन दैट नोट गुड नाइट, एंड कुछ पूछना हो आप लोग मुझे डीएम कर लेना, एंड बाय बाय। आपका एसओपी मैं भेज दूंगी कल तक, ठीक है। अभी तो मैंने ऑन Thank you so रिकॉर्ड much. बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। चलो बाय बाय। Bye bye.